Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist. And you are watching Dr. KK's Med Talks, Thursdays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 768 767वां एपिसोड है. Let's have the headlines for today. वायरस, बैक्टीरिया, इन चीजों की कमी तो थी नहीं पहले, but now the World Health Organization has released the first ever list of health threatening fungi. So these fungus जो है, जो हम खाते भी हैं, we eat many kinds of fungus like mushrooms, ये health को threaten करते हैं, and we have a list, official list from the WHO. The Bihar government has put its hospitals on alert against the XBB variant of COVID. तो COVID के नए variant आ रहे हैं और हमें बच के रहना है, चुकन्ना रहना है. But in Indian pharma, Alembic Pharma, Indian pharma company has got US FDA approval for its paclitaxel injections. ये अमेरिका के स्टैंडर्ड्स के बनाए हुए हैं. Two studies have reported striking similarities between the cardiovascular, that means the heart-related effects of cigarettes and e-cigarettes. E-cigarettes इंडिया में banned हैं और मेरे ख्याल बहुत अच्छी बात है, because the studies show that dual use, using both cigarettes and e-cigarettes, may further worsen the situation. And another study has linked smoking to early vision loss and cataract. तो यदि आप स्मोक करते हैं तो हार्ट पे तो असर पड़ता ही है, लंग्स पे भी पड़ता है, पर आपकी आंखें भी जवाब देती हैं. You will get cataract earlier. After this news, let's go to our topic for today. Again, a very heavyweight topic. हमारा टॉपिक है obesity management. That means मोटापे को मैनेज करना for primary care physicians. So of course everyone is logged in today. We have people from all walks of life. मगर हमारा फोकस रहेगा on primary care physicians. आप primary care में obesity को कैसे मैनेज करें. And for this we have a special guest. हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विनीत कुमार सुराना. Warm welcome डॉक्टर विनीत. Good evening sir. Good evening everyone. देखिए मेड टॉक्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत. Let me introduce Dr. Surana to everybody. Dr. Saab is an endocrinologist and diabetologist working with Manipal Hospitals in Dwarka, New Delhi. इनकी MBBS है from Jipmer, Pondicherry, one of India's most prestigious colleges. MD Pediatrics from Maulana Azad Medical College and DM in Endocrinology from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. तो जो बेस्ट पेडिग्री है हमारी, जैसे कि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने यूके के, ब्रिटेन के, तो उनकी एजुकेशन के बारे में कहा जाता है बढ़िया पेडिग्री, बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूके एंड यूएसए. तो ऐसे ही डॉक्टर विनीत कुमार सुराना है फ्रॉम द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ न्यू दिल्ली. बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पे ही इन्होंने पढ़ाई के बाद रेस्ट किया, उसके बाद बहुत सारी और चीजें की. एंड आई थिंक वी कैन हियर वन लिटिल मिस सुराना एज वेल. उनको देख सकते हैं क्या डॉक्टर विनीत? नहीं सर, अभी मैंने उसको दूसरे रूम में रखा हुआ है, बट शी कैन कम एनी टाइम. सो विल बी हैप्पी टू मीट हर. एंड जो डीएम के कार्यकाल में डॉक्टर साहब ने काम किया, फॉर दैट ही रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस एवी गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एंडोक्राइनोलॉजी, व्हिच इज आवर टॉप मोस्ट अवार्ड इन एंडोक्राइनोलॉजी. And currently he is busy organizing SpeedCon for all the doctors is North India's most prestigious diabetes and endocrinology conference. और पिछले कई साल से डॉक्टर विनीत इसको ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं. So Dr. Vineet, warm welcome. Thank you sir, thanks for such a nice introduction. But then I would say it is your support to us since I joined the DM that has led us to all of the speed member reach at this stage. And it's not only me who is organizing the SpeedCon, it is the team effort. And I would say to my audience that Dr. Kalra has been the I would say the torching guide for all of us, that how to organize it, what should be the best topic, which are the speakers, how to engage the audience. And we have even involved the public also in this SpeedCon, and all this with the guidance of Sir only. And Dr. Vineet, a lot of fellow pediatricians logged in today, all greeting you and sending kudos to you. Dr. Vineet Vipin Bhandula, Dr. Ramesh Pal Singh Pawar sir is 70-year young pediatrician. सब आपको शाबाशी दे रहे हैं और नमस्कार बोल रहे हैं. Also एक बड़ा प्यारा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, और ये फ्री फायर सुपर किंग से जो कहते हैं ज्ञानी लोग अभी भी जिंदा हैं, तो टाइगर अभी जिंदा है. क्या बात है. अरे नहीं सर. केदार जोशी जी, अमन सिंह, वेदांत कुलकर्णी साहब एंड स्वप्ना जैन मैडम,
Madam is an advocate for healthy living with obesity from Vellore in Tamil Nadu. Madam आपको greet कर Oh, रही हैं. And Dr. very N.S. nice. Sharda sir, Good evening. Dr. Bhalchandra Mishra, डॉक्टर संजीव पुरी भी हैं फ्रॉम होशियारपुर. एंड क्वेश्चन ये आ रहा है कि ओबेसिटी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट सो फ्रीक्वेंटली एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी इन प्राइमरी केयर. तो एक सिंपल यस या नो में जवाब देना आसान है क्या? इज ओबेसिटी अ डिजीज फॉर द स्पेशलिस्ट्स? इज ओबेसिटी अ डिजीज फॉर प्राइमरी केयर फिजिशियंस? और इज इट फॉर एवरीवन हु लिव्स विद ओबेसिटी? जिम्मेवारी किसकी है? Whose responsibility is it? We all know that yes, obesity is a disease. Though the WHO and the governments of various countries have not yet recognized obesity per se a disease, but we can say that obesity is mother of all the diseases. Where all the lifestyle disease which we see today's era is primarily because of the obesity. And I will not say that it is a responsibility of either the obese person who is with the obesity alone, or it is the responsibility of the primary care physician or the specialist. Actually, it is the responsibility of whole society. Society as a whole has to change if we really want to tackle this epidemic of obesity. राइट. सो ये जो ओबेसिटी सभी की जिम्मेवारी है, इट इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द्रौपदी इन द महाभारत. एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो वन स्टूड अप फॉर हर. तो ओबेसिटी में भी Yes. ऐसा ही होता है क्या? Up to an extent मैं सर आपसे सहमत हूँ कि yes, no one stood for this. So the person who is obese, yes, he will be kind of कि ठीक है मेरा तो वजन है, and then they start putting that so basically कि okay, I have a thyroid disorder इसलिए मेरे को obesity है, मेरे तो खाना तो कुछ नहीं है लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है इसलिए obesity है, मेरे को घर में टाइम नहीं मिल पाता इसलिए एक्सरसाइज नहीं हो पाती इसलिए मेरा वजन बढ़ गया है. Same as happened with us also as a primary care physician, that when we look at the patient who are coming with the obesity, so most of the time what happen, everybody is busy in their OPD, they see lot of patient, obviously we have a less doctor patient ratio. So what happens, patients is coming with so many other causes, so you will find hardly in your whole OPD of around 50 patient, you will one or two patient who are only come for the obesity, but mostly they come for the other disease. And then it is really surprising that none of us, I would say, predominantly talk about their obesity per se. So when we treat their diabetes, when we treat their hypertension, when we treat their dyslipidemia, even a simple sore throat, for that they have come. So obviously they are going to the primary care physician for the simple sore throat, fever. I think those are the time when we need to kind of open up and I mean, we will not say that we directly talk to them about the obesity, but at least we can have a healthy discussion with them. Ki, okay, now we'll give you treat for this disease, but do you think it will be a good idea if we little bit discuss about the weight problem also which you are facing, if you are finding that it is difficult for you to reduce? So that's how we can actually involve the person with the obesity, and I'm sure that any person who is with the obesity, at least once he is going to encounter any primary care physician for I mean causes which are other than the obesity, and that is the time when as a physician it becomes our responsibility that we take care of that part. So जैसे कि महाभारत में ultimately अर्जुन को उठना ही पड़ा था, तो सेम यहाँ पे भी है कि हमें अर्जुन बनना पड़ेगा, और हमें इस मेनिस को अगर ट्रीट करना है तो हमें पेशेंट से बात करनी पड़ेगी. We can't just write the medicines and tell them okay, you take this, you'll be well, and they also forget. We have to kind of ask them कि can we discuss about this part also with you. And Rameshpal Singh Pawar sir reminds us that he is 73 years young, not 70. And Okay. sir is a beacon of inspiration for us, क्योंकि इनसे हम सीखते हैं कि हेल्दी Definitely. कैसे हो. Yes डॉक्टर sir. विनीत से हम क्या सीख रहे हैं? The role of communication. So what Dr. Surana is saying that maybe out of 50, just one or two people will come and say, my chief complaint is obesity. मगर अगर आप ध्यान से देखें तो many of them have obesity, either as a cause of their disease. जैसे he said obesity is the mother of all diseases, so maybe the obesity is causing high glucose levels. Obesity may be a comorbid condition. Obesity भी है और thyroid भी है, दोनों चीजें इकट्ठे चल रही हैं. And obesity may be a complication also of the disease. मान लो आपका फ्रैक्चर हो गया टांग का, उसकी वजह से आप Yes. एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो फिर आपको obesity होगी. So obesity can be a cause,
It can be a comorbid condition. It can also be a complication. Obesity can also be a confounding factor. कंफाउंडिंग फैक्टर कैसे? मैं दवाई तो देना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर इंसुलिन देना चाहता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि वजन ना बढ़ जाए। मैं ऑपरेशन कहना चाहता हूँ कि आप ऑपरेशन करवाओ, मगर मैं 100% श्योर हूँ इतनी ओबेसिटी पे तो मैं एब्डोमेन नहीं खोल पाऊंगा। खोलूंगा तो हर्निया हो जाएगा या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो इट कैन बी अ कंफाउंडिंग फैक्टर। आई मे नॉट बी एबल टू गिव द राइट थेरेपी। विद ऑल दिस, व्हाट डॉक्टर विनीत इज सेइंग, इतने सारे सीज हो गए, कॉज, कोमॉर्बिड कंडीशन, कॉम्प्लिकेशन, कंफाउंडिंग फैक्टर। एक ही जवाब है, दैट इज सी फॉर कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट द कम्युनिकेशन और बात करना शुरू करें। हमारे पास एक एक्सपर्ट लॉग्ड इन भी है, उनका नाम है ललित कथुरिया साहब, और ये लीडिंग बिजनेसमैन में से हैं हरियाणा के। एंड he uses the concept of communication to convince people to live healthy, to eat healthy, to exercise healthy. It would be good to get insights from everyone. What kind of communication strategies have you used with your friends, with your colleagues, with your family members who are obese? कब आपको उल्टी पड़ी, कभी मुंह की भी खानी पड़ी हो, एंड कब आपको फायदा हुआ? When do you think you took the right communication strategy? डॉक्टर एन एस शारदा सर बोलते हैं डॉक्टर विनीत के, ट्रैवलर्स आर चार्ज्ड एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा वेट। सो व्हेन यू लेट Yes. अस से गो टू द एयरपोर्ट एंड 2 kg ऊपर है, तो वो वाली लड़की या एयर इंडिया वाली लड़की वो आपसे पैसे एक्स्ट्रा लेती है। तो सिमिलरली, इफ यू चार्ज obese people एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड डिनाई देम Uh, इंसेंटिव्स, देन व्हाट विल हैपन? तो आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में? uh, so I don't agree with that up to an extent. The reason being कि हम अगर ऐसे चार्ज करने लग जाएंगे ना तो हर जगह फिर so there will be a kind of revolt because see what I would say 1/4 of our population. So I had a so the reason for the reason I got the AV Gandhi award was actually my study in on the obesity. And that time we took a data from the Delhi schools which were from the government as well as the public schools, and almost 25% of the children were overweight and obese. Now if we start charging 25% of the patient extra taxes and deny them of the incentive, so that will be kind of more of a punishment, I would say. So I feel in a disease mostly which are the lifestyle disease, punishment therapy is something which may not work. It is more of a, you need to involve them, you need to tell them, okay, you need to handhold them and tell, we are with you in your fight against the obesity, we will help you, and we need to do this way. I mean, see, I don't find that people are not ready to lose the weight. There are people who are ready to lose the weight, but somehow they don't get an adequate guidance. They don't get a support from the society. So let me give you one simple example. In a family of four, if one person is obese and they need to eat it differently compared to the other three, what happens? So the family usually try to tell, ki, okay, why you have to cook the two kind of the food? You can't. So and then the person will not get a support from the family for the other kind of the food which he is supposed to eat, or for that matter family doesn't change completely कि okay ठीक है हमें इसका साथ देना है, इसको जो खाना डॉक्टर साहब ने बताया है वही खाना हम भी खा लेते हैं. Obviously that is a healthy food. Only thing is you need to avoid the junks out of it. And anyone who is on a good healthy food, they will definitely lose weight until unless they have some endocrine problem where there can be a weight loss issues. But otherwise, a general common obesity, if they do a good exercise, they are on a healthy food, they will lose weight. But then they don't get even the support from the family. Forget about the society. So this is something which we need to change. We tax them more, we deny them from the privileges, then probably that will be more like a revolt. And we know that when the person's mindset is towards the revolt, okay ठीक है मैं इसलिए ऐसा मेरा वजन ज्यादा है इसलिए मेरे को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, probably they will do it more. वो बजाय कि उस चीज को ठीक करने को उसको और खराब कर सकता है. अंशु सिंह जी और निर्मला गुप्ता मैडम ने भी लॉग इन किया है। एंड व्हाट वी आर हियरिंग डॉक्टर विनीत इज, एक तो अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन जो आपने सबसे पहले कहा था, नाउ व्हाट वी आर हियरिंग इज के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। डोंट गिव नेगेटिव फीडबैक और नेगेटिव sort of motivation for the patient. Yes, yes, Try to create positive motivation. And जो आपसे वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, गिव कॉन्फिडेंस टू द पेशेंट, बी कंपैशनेट, सी फॉर कॉन्फिडेंस, सी yes, फॉर कंपैशन, प्यार से बात करें, डोंट लुक डाउन अपॉन द पेशेंट, उसको बिल्कुल अलग ना करें भी आपका खाना अलग और हमारा अलग। एंड एक और सी आ गया, दैट इज कॉम्पिटेंस।
कॉम्पिटेंस मतलब अब सडनली आई एम रियलाइजिंग कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट शुड बी कॉम्पिटेंट, द जनरल फिजिशियन, प्राइमरी केयर फिजिशियन शुड बी कॉम्पिटेंट एंड आल्सो द फैमिली मेंबर्स। तो हमें पता होना Yes. चाहिए कि हेल्दी डाइट की परिभाषा क्या है, हेल्दी एक्सरसाइज की डेफिनेशन क्या है, दैट इज कॉम्पिटेंस। With all this, what Dr. Vineet is saying, that easily you will have success, but now he has talked about endocrinopathy, endocrine diseases. तो डॉक्टर साहब, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या, प्राइमरी ओबेसिटी या एक्सोजीनस ओबेसिटी एक तरफ, एंड सेकेंडरी ओबेसिटी या ओबेसिटी ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीजेस एक तरफ? इज देयर अ कॉन्सेप्ट लाइक दैट इन मेडिसिन? Yes, sir. Yes, sir. Primary obesity, or what we call exogenous obesity, is mostly the factors which governs are your lifestyle factor, and obviously up to some extent your genetic also plays a role. But when we talk about the endogenous obesity, which are predominantly because so there are certain syndrome जहाँ पे कि बचपन से ही वेट ज़्यादा रहा है बिकॉज ऑफ दैट सिंड्रोम, वो एक अलग चीज़ हो गई। अदरवाइज कुछ हार्मोन्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, एक हमारा होता है कॉर्टिसोल एक्सेस सिंड्रोम, जिसमें कि एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, जब वो ज़्यादा हो जाता है शरीर में तो उसको कुशिंग डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है। इवन थायराइड पेशेंट ऑल्सो डू गेन वेट, बट देर इज अ सम मिसकंसेप्शन दैट थायराइड पेशेंट को अगर एक बार थायराइड हो गया तो उसको वेट गेन होना ही होना है, उसका तो ठीक नहीं होना है। एक्चुअली थायराइड पेशेंट का मैक्सिमम वेट गेन 4 to 5 kg होता है, वो भी जब बहुत ही खराब थायराइड होता है, एंड मोमेंट जब उनके थायराइड कंट्रोल में होते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। Yes, if you have a hypothyroidism, if it is not controlled, then you will have a low metabolic rate, and then you may find it difficult to lose weight. But moment you control it, your weight loss start happening. So, so then other than that, there is a something called insulin resistance happening because of the genetic factors. There also you can have a obesity. So there are certain endogenous causes which causes the obesity, but mostly in a commonality, if we talk, 95% of the causes of obesity is the exogenous obesity, which we are seeing, which is happening very rapidly over the last 30 years, 30 years in this country after the formalization of the economy, sorry, liberalization of the economy. लिबरलाइजेशन एंड अनामिका जी एंड प्रतिभा जी हैव आल्सो जॉइंड द डिस्कशन। तो वो पूछ रहे हैं, यू हैव टॉक्ड अबाउट द नीड टू फोकस ऑन ओबेसिटी, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव सेड दैट द फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन, बट along with communication we need competence, we need compassion, Yes. and we also need to build confidence in the patient. We need to know the types of obesity. तो एक सिंपल सी चेकलिस्ट शेयर करता हूँ। आप कब डिसाइड करेंगे एज अ जनरल फिजिशियन या एज समन इन द फैमिली कि किसको सेकेंडरी कॉज हो सकता है ओबेसिटी का, सिंड्रोमिक ओबेसिटी? सो एक डी वाली सीरीज आएगी जो सबको याद रहेगा। डी इज फॉर डेवलपमेंटल डिले, and we have many pediatricians here, so they will easily be able to tell us what developmental delay is. D is also for diminished IQ, cognitive dysfunction. D for diet abnormality in the form of hyperphagia, 24 घंटे Yes. भूख लगी रहती है, चाहे टाइम हो चाहे ना हो खाने का। D reminds me of dynastic history या family history, that can also be syndromic. And D is dysmorphism, digit anomalies, मतलब उंगलियों में abnormality, polydactyly, brachydactyly, syndactyly, या D for dysmorphism in the form of dome of head, मैक्रोकेफली, माइक्रोकेफली, एक्रोकेफली, ये वाली चीजें। तो अगर हमारे पीडियाट्रिशियन कलीग्स या प्राइवेट या जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं वो ये डीज याद रखेंगे: डेवलपमेंटल डिले, डिमिनिश्ड आईक्यू, diet abnormality or hyperphagia, dynastic history, and dysmorphism in the digit, dysmorphism in the dome of head. That is the fairly quick checklist for all of us to check. एक और क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम प्रतिभा जी, एंड मैडम पूछ रही हैं कि there is this new class of drugs called SGLT2 inhibitors, which is being used in diabetes. Can I use Yes, it sir. in a non-diabetic patient? For what indications and what impact will it have on obesity per se? Okay. So as such, SGLT2 inhibitors are not approved for the obesity only. They are predominantly used for the diabetes. But over the last few years, we have got lots of data where it has shown that yes, it does help in improving the heart function as well as preventing the kidney disease. So any patient who has got either the established heart disease or the heart failure, there even without diabetes, these drugs can be used. And secondly, even in a moderate kidney dysfunction, where we when we talk about something called EGFR, where the EGFR, if it is less than 60, and
if it is more than 20, we can use it to prevent the further deterioration of the kidney function. So these are the two conditions where it can use. And yes, in those conditions also it will help in reducing the weight. So that was SGLT inhibitors, and thank you, Dr. Vineet, for explaining so simply. एक और क्वेश्चन आ रहा है कि there is another class of drugs, injectable GLP-1 RA. Hmm. तो injectable GLP-1 RA क्या होते हैं? इंजेक्शन क्यों देना पड़ता है हमें? And can we use them in obesity management? Okay, so GLP-1 RA is basically glucagon-like peptide 1 receptor agonist. Now, there, as we say, glucagon-like peptide. So, their peptide. Peptide is something which cannot be used as an oral pill because our stomach acid will digest it. Though we have a now a kind of what we call uh, we have surpassed that challenge now, and we have a oral pill also in a peptide form. That is another GLP-1 RA, which is comes with a semaglutide, but the same semaglutide is come in an injectable form also. When we talk about obesity, so oral drug has not shown much benefit when we compare it with the injectable form. So this GLP-1 receptor agonist injectable form has shown that this significantly reduces the weight loss, and and this weight loss is predominantly because of functioning at the gut level of these drugs, where it reduces the where it leads to the fullness and early satiety, and also it acts at the neurotransmitters level, and it causes the reduction for the need for the food, so basically through which it causes the weight loss. So yes, there are certain drugs which has been approved for the weight loss. So one is injectable semaglutide, which is approved for the weight loss in the United States by the FDA. And then there is another drug called liraglutide, which is in a dose of 3.2 mg, has been also approved for the weight loss. Yes, semaglutide has got a lot of media coverage in the last few months because of significant weight loss effect of this drug. And then we have another one now, one step ahead of this is GLP-1 receptor agonist, and along with that GIP, what we call is a twin cretin hypothesis, in which, and those drugs which is comes with the name of trepagitide, and that has also shown a significant weight loss, even better than the injectable semaglutide. So yes, these drugs are giving us a lot of hope in that in the near future we'll have something in our hand also to treat obesity pharmaceutically. Otherwise, we do have some drugs, but they have not shown a very promising effect and have their own side effects. So ultimately, we are left only with the orlistat in this country as of now, which can be used for a weight loss. Right. So orlistat is available. We also have we also have medical nutrition therapy, medical grade high protein concentrates जो आप use कर सकते हैं as meal replacement therapy. And Dr. Yes, Vipin Madula adds that we now have this new endoscopic treatment, Allurion swallow yes, pills. तो ये क्या होते yes. हैं? So basically, they basically go into the gut, and they act like a balloon. So they go and inflate inside your stomach, and that's how they basically creates more like a medical bariatric, you can call. So in a bariatric, basically what is done is that we cut down the size of the stomach, and so our appetite goes down. And there is also concept, because if there is a fundoplication you do, so basically you also reduces the hormones, which leads to the increased hunger and the increased weight. So, and this basically balloon goes and inflate inside, and that's how it basically causes less hunger. So your meal content goes down, your appetite goes down, and that's how you lose the weight. And then there is another one therapy where this just go and coat the whole intestine. It works as a tube over the intestine in the duodenum and the jejunum, and it doesn't let the nutrition to get absorbed, and that's how it causes the weight loss. So both So therapy are available, and both are done endoscopically. so multiple things coming up, and यही तो रेजिलियंस है ह्यूमन काइंड की. रेजिलियंस मीन्स कि चैलेंज आता है, बट हम उसका सामना करते हैं. मंजू गुप्ता मैडम पूछ रही हैं, आपने कहा कि ऑर्लिस्टैट अवेलेबल है इंडिया में एंड इट इज अप्रूव्ड. व्हाट इज हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई टेक, व्हाट टाइम शुड आई टेक, व्हाट शुड आई बी अवेयर ऑफ? Okay, so orlistat is something which is used as a mild drug for causing weight loss.
it can lead to around 5% of weight loss with a good lifestyle intervention along with the aldosterone. uh, Usual doses over the counter is 60 mg, which can be taken with each meal, and the prescribed dose is 120 mg. So usually we don't use 60 mg very frequently. Mostly in our country, we use the 120 milligram dose, and it should be taken with each meal. Basically, it is a lipase inhibitor, so it doesn't get your fat to get absorbed from the food to the gut. You you require fat for your own day-to-day activity, and then body start utilizing the inner fat. Now the 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 challenges which can come sometime with the older status flatulence. There can be something called a lot of gastritis, though usually the patient tolerate it very well. And the most important thing which can happen is there can be something like a oil leak kind of phenomenon where undergarments may be stained with the oil, and which is a normal way of functioning of this drug. So thank you for that information. And ललित साहब पूछते हैं, मैडम ने तो पूछा था ऑर्लिस्टेट का, तो ललित साहब पूछ रहे हैं ऑर्लिस्टेट प्लस एकार्बोज Hmm. or acarbose alone, can I use in non-diabetic patient for weight loss? Acarbose, I am not aware of that it leads to the weight loss, and whether we can use it with the orlistat, I don't have any experience, sir, and I have not gone through any data which suggests that it can be combined with the orlistat for the weight loss Or per se. acarbose is a very good drug to use for pre-diabetes and also for diabetes, Yes, क्योंकि yes. चाइना में ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, और चाइना में जब डायबिटीज प्रिवेंशन स्टडी हुई तो बेस्ट रिजल्ट्स एकार्बोज के साथ आए, कि एकार्बोज के साथ डायबिटीज प्रिवेंट होती है एंड इट इज बेटर देन मेटफॉर्मिन, बेटर देन लाइफस्टाइल. तो उस तरह से वी कैन यूज, बट इट विल नॉट कॉज वेट लॉस. कुलकर्णी साहब एक मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर विनीत, एंड ये बिलियन रुपी क्वेश्चन है. इज देयर एनी सिंगल स्ट्रेटजी और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन with which you can convince a person to get rid of obesity without hurting that person, without making them feel awkward? Okay, so that's what I tell. Whenever you are seeing a patient, don't tell them directly कि यार तू तेरा तो वजन बढ़ा हुआ है, हमें अब इसके बारे में बात कर लेते हैं. If you talk like this, then that person is never going to come back to you, even for the non-weight related issues also. What we need to discuss them empathetically, I would say, is that okay, sir, we have treated you for this, but do you think that your weight is slightly on a higher side? Do you think that this is something where you need to work upon? If they agree with that, then probably that is the point where you can take it further. But if they say no, I am comfortable with this, I don't want to discuss about the weight, then I don't think you should force the person to discuss about the, maybe then you can involve the family members, and then later on you can convince them. So it's not a one line strategy for each and every patient. Every patient is different. You need to read their mind, and then you have to act accordingly. जो डॉक्टर विनीत ने कहा और जो डॉक्टर वेदांत ने पूछा, ये एक कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है. इट इज एन इंटरव्यू. एंड एक्चुअली कॉन्वर्सेशन का काम क्या होता है? कॉन्वर्सेशन का काम है टू बाइंड अस टुगेदर. अब देखो हमारी बाइंडिंग कैसे हो रही है, बॉन्डिंग कैसे हो रही है. ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, कॉन्वर्सेशन बोल तो रहे हैं डॉक्टर विनीत सुराना, बट all of us are bound together with one common aim that we want to accomplish, and that is better health, that is weight loss. तो जब आप ओपीडी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या आप घर पे भी किसी लव्ड वन के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो एम ये नहीं है कि आपने तोड़ना है या बिगाड़ना है. एम ये है कि आपने बांधना है, जोड़ना है. अगर हम ये चीज मन में ले आए, इफ वी आर एबल टू इंटरनलाइज दिस, 99% of our battle is over. Dr. Vineet, what do you think? Is this right in the endocrine OPD, in the obesity diabetes OPD? Is this statement right? This is absolutely right, sir. हमें हमें तोड़ना नहीं, हमें जोड़ना है. When we start binding together, then only we can treat them. So let me share a few do's and don'ts. And मिश्रा जी आपको कह रहे हैं जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण. And I've been watching these trailers. मैं अभी मूवी नहीं पूरी देख पाए, पर जय श्री राम उसके गाने भी ना, they kind of wake you up and they make you want to be more proactive. So Okay. so we should all be proactive. But if you are a primary care physician, or if you are a member of public and your patient or your loved one has obesity, the things not to do are not to delay. टॉपिक तो आपको छेड़ना ही है. ये आपके कर्म है कि आपने कम्युनिकेशन शुरू करनी है, कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, तो आप प्लीज शुरू करें. आगे सामने वाले के कर्म है, व्हाट ही और शी रिस्पॉन्ड्स विद, व्हाट ही और शी डज.
वो उनके कार्य जो है वो उनको करने दे, दैट इज अ सेपरेट मैटर, बट वी शुड नॉट डिले। द सेकंड थिंग इज वी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट, एंड मैं खुद गिल्टी हूँ इसका, मैं मानता हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस इट। तो नॉर्मली हाँ जी वजन बहुत बढ़ा हुआ है, खाते पीते घर के हैं, so you start like that, and that is a distraction for the patient. Half of the times it is actually an ice breaking thing for me, I am trying to relax the patient, but half of the times patient actually goes back thinking that this tummy is very nice and healthy and I have got a stamp of approval from a senior doctor. So do not distract, अगर टॉपिक ओबेसिटी है तो ओबेसिटी पे ही रहे। डू नॉट डिमीन एज वेल, डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पेशेंट। तो जिस तरह से तारीफ भी नहीं करनी चाहिए कि आप बहुत मोटे हैं, बहुत अच्छी बात है, बुराई भी नहीं करनी चाहिए कि इट्स ऑल योर फॉल्ट, यू आर लेजी, यू आर तामसिक, यू आर गुड फॉर नथिंग, दैट इज वाई यू आर ओबीज। सो डू नॉट डिमीन योर पेशेंट, डू नॉट डिस्करेज ऑल्सो। ऐसा भी ना कहें कि वजन का तो कुछ हो नहीं सकता, इट्स अ लॉस्ट केस, नो पॉइंट इन वर्किंग। बिकॉज स्टडीज थी, लुक अहेड स्टडी थी जिसने कहा कि अगर आप कोशिश भी करते हैं वजन कम करने की, सिर्फ 3% भी आप अपना वजन कम कर लेते हैं तो भी आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। सो जस्ट ट्राइंग टू लूज वेट हेल्प्स यू इंप्रूव योर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। And do not demonize. So do not delay or distract, do not demean or discourage, and do not demonize. ये नहीं कि all the बीमारियां in the world and everything in the world जो खराब हो रहा है that is because of overweight people. ऐसा भी ना करें, अभी तुम overweight हो इसीलिए हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तुम overweight हो इसलिए हेल्थ का बिल ज्यादा आ गया घर का। So don't do that. So these are the deeds not to do. डॉक्टर विनीत, एनी एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर ओपीडी? कभी आपने सही कम्युनिकेशन किया हो, कभी गलत कॉन्वर्सेशन में फंस गए हो ओपीडी में और नुकसान उठाना पड़ा हो आपको या पेशेंट को? एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? ओके, सो आई वुड से दोनों ही चीज़ें हुई हुई हैं कि जब हम सो आई वाज सीइंग अ पेशेंट, आई मीन a patient whose son was also with her, and then so probably he has brought the mother for the diabetes. Obviously we treated the diabetes part of her, and then I just casually asked that guy also कि यार तुम्हारी तो फैमिली हिस्ट्री है थोड़ी सी डायबिटीज़ की, और आपको लगता है कि आपका वजन थोड़ा सा ज़्यादा की तरफ है, should we not, should we kind of discuss about this, should we not kind of work upon this? And that was kind of, I would say, the ice breaking point. He told, हाँ डॉक्टर साहब मेरे को बात करनी थी, बट देन मुझे लग रहा था मैं वजन के लिए क्या किसी से बात करूं, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा था, बट क्या इसका कोई उपाय है? Then he himself opened it. Then we find out what is the reason for the weight gain, why he's not able to exercise, what are the things. And then 6 months down the line, if the person is motivated, they lose weight. He lost almost like a 15 kg in 6 months. And his, I mean, if I talk about the percentage term, his weight loss was around 10% in a 6 month, which is a very good weight loss. And if we can do that, nothing like that. And the most important thing is moment they start losing even the 5%, 3% weight loss, as you said, sir, they get motivated कि हाँ मैं कर सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है, सालों साल ना वो थोड़ा बहुत बीच में करते हैं, 1-2 किलो कम होता है, फिर से बढ़ जाता है, देन दे गेट डीमोटिवेटेड कि यार कुछ हो नहीं सकता, इस वेट का इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है अपने को बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है। बट जब व्हेन यू एंगेज देम एंड व्हेन दे सी कि यस दे कैन लूज वेट, then they themselves get motivated. They don't require you after that much. They themselves work upon that, and then you will one fine day suddenly you will see after 1 year, 2 year they'll come back just to tell you the thank you कि सर आपने उस दिन मेरे को ये मोटिवेट किया था, आज देखिए मेरा वजन 20 किलो 25 किलो कम हो गया। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि आते हैं एंड दे जस्ट डोंट जस्ट कम टू से थैंक्स टू यू, एंड दैट इज व्हाई यू फील प्राउड ऑफ व्हाई यू हैव डन द मेडिसिन इन योर लाइफ। दैट इज द मोस्ट important thing. And then at the same time there was an incident where actually I was very busy in my OPD. That patient was showing only for the obesity. It was almost 2 months post follow up, and then initial 1 month they lost the weight, and then again she gained back to the same level. I got furious. मैंने तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते इसका मतलब, this is something which I am kind of, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम कुछ और कर लो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊंगा। And then obviously that was a really bad on my part, I agree with that. And then she also got furious कि ऐसे थोड़ा ना होता है, and but the best thing happened, she took it as a challenge. फिर एंड दोस्ती होगी? वो हाँ नहीं, वो दोस्ती नहीं, वो 6 महीने बाद मेरे पास आए कि आपने मुझे बोला था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये देखो मैंने आपको बिना दिखाए अपना वजन कम किया है। आई टोल्ड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, यू डिड इट, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, बट देन
I then told her sorry also कि yes, I was overboard that day. मेरे को इतना नहीं बोलने की जरूरत थी, but then at the end of the day I am happy कि चलो उस चैलेंज के कारण ही सही तुमने छह It's महीने में come इतना to वेट तो लॉस किया. So yes, you see both kind of the things, and then I completely agree with you, sir, that we have to be sometimes really careful however busy we are in our wordings, because our words make the whole difference in the management of the patient. हम कैसे बात करते हैं, हम क्या वर्ड चूज करते हैं, वो सारी कहानी डिसाइड करता है. तो रेखा जी एंड डॉक्टर पवार के क्वेश्चंस लेते हैं, बट अभी हमने बात की कि डू नॉट डिले और डिस्ट्रैक्ट, डू नॉट डिमीन और डिस्करेज, एंड डू नॉट डेमोनाइज. बट अगर ये ना करें तो करें क्या? तो अभी डॉक्टर विनीत ने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है. यू मस्ट ई फॉर इंक्वायर. डॉक्टर साहब ने बात की उस पेशेंट से और पेशेंट के बेटे से. सो एक्सप्लोर एंड इंक्वायर. जब आप एक्सप्लोर करते हैं, इंक्वायर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर एंगेजिंग विद दैट पर्सन. सो डू एक्सप्लोर, इंक्वायर एंड एंगेज. जब आप बात कर रहे हैं, रिमेंबर टू कीप एन एनकरेजिंग टोन, एम्पैथिक टोन. एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी बहुत डिफरेंस है, वी आर ऑल अवेयर. सो डॉक्टर विनीत ने क्या किया, अपने पेशेंट्स के साथ एनकरेज करते रहे, एम्पैथाइज करते रहे कि मैं आपके साथ हूँ. एंड शुरू में हैंड होल्डिंग की जरूरत है, बाद में तो जरूरत भी नहीं पड़ती. एंड Yes. ऑल्सो ई फॉर कंटिन्यू टू एनर्जाइज योर पेशेंट्स. अगर वो कभी ढीले हो जाए, महीने के बाद वेट गेन हो गया, तो उनको डेमोनाइज या डिमीन ना करें, उनको एनकरेज करें. लेट्स कम आउट ऑफ इट अगेन. चलो गिर गए हैं, फिसल गए हैं, लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. और इसी चीज पे डॉक्टर पवार सर पूछ रहे हैं. सर इज 73 years young, like we said, pre-diabetic with a weight of 105 kg and height of 8 feet तो नहीं होगा ना सर, 5 feet 8 inches होगा. तो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी अरिथमेटिक में. हाँ, डॉक्टर पवार मस्ट बी फ्रॉम हरियाणा, हमारे वाली मैथ्स है सर की. So, हाँ. तो maybe 5 feet 8 inches and 105 kg. तो I think BMI will come around 33 or so roughly. बट एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, फिजिकली फिट हैं. सर का ये क्वेश्चन है, कैन आई यूज ऑर्लिस्टैट और एकारबोज फॉर माय वेट एट एज 73? Yes, sir. Orlistat can be used even at the 73 years of age. If there is a no gut related issue, definitely it can be used. सर वी कैन ट्राई 60 मिलीग्राम बीडी विद द टू मेजर मील्स, जो भी आपके दो भारी Yes, खाने हैं. अगर आप कंफर्टेबल फील करें, यू गो अप टू 60 टीडीएस. इफ यू आर एबल टू टॉलरेट, देन यू कैन गो अप टू 120 टीडीएस. बट 120 टीडीएस बहुत कम चांसेस हैं कि आप टॉलरेट कर पाएंगे. you will most probably get मुश्किल हो stuck at जाता 60 है. TDS और 120 BD. एंड अगर आप किसी सोशल फंक्शन पे जा रहे हैं, या मान लो आपने ट्रैवल करना है, मे बी एन 8 hour जर्नी बाय बस, जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, नो हार्म इन स्किपिंग योर टैबलेट फॉर दैट डे. वो जो Yes. कैप्सूल है उस दिन के लिए आप स्किप कर सकते हैं, व्हेन यू डू नॉट हैव एक्सेस टू रेस्ट रूम एट योर लेजर. रेखा जी का एक क्वेश्चन है. मेरी हाइट है 4 feet 10 inches, 145 centimeter, and weight is 70 kg. एंड अगेन बीएमआई इज अपवर्ड्स ऑफ 30, आई थिंक. तो कैसे Yes. वेट लॉस करें? एज इज 61. तो कैन यू गिव अ Okay. फ्यू पॉइंटर्स टू मैडम प्लीज? Okay. So basic thing है कि आज की डेट में ना हमारे हम सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं. तो बहुत so there are so many apps which tells you about the calorie intake, how much you are taking, how much is the carbohydrate you are taking, how much is the protein content you are taking. We can use that. Or the simplified thing is we need to cut down on the calorie. We need to include more and more of green vegetables, salads. We need to cut down on the refined carbohydrate. When I talk about the refined carbohydrate, the three four things which we need to understand is शुगर, जैगरी. जैगरी खांड जो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है कि चीनी मत खाओ वाइट वाली, लेकिन खांड खा लो बराबर है. ऐसा नहीं होता है, खांड में भी उतनी कैलोरी होती है. And same way something which is made up of maida. So if we close our eyes and we think of all the good things which we like in our life to eat, everything is either with the sugar or with the jaggery or with the maida. We need to stop those things immediately. Yes, you can have once in a while. There is a Diwali festival. You can indulge into your favorite things, but then on a regular basis, we need to avoid that very, very strictly. We need to cut down on our carbohydrate contents. We are anyway carb rich country where our almost carbohydrate content in diet is 60 to 70%. We need to cut down that to maybe around 40 to 50%. We need to include more and more protein part in terms of the soya beans, pulses. If non-vegetarian, then yes, you can take a healthy meat, something like a white meat like chicken, fish, eggs. These are the things which can be included into the diet. And along with that, we need to start walking. See, remember when we talk about the walk, walk is something which is a brisk walk. One,
When we talk about 30 minutes walk, that is to keep our heart healthy, but that will not lead to weight loss. For the weight loss, we need to have at least 1 hour plus of brisk walk. So that, what does that mean? We have to have around 5 to 6 kilometer of walk on a daily basis. I would not say that today, because Dr. Surana has told tomorrow I walk for the 6 kilometer and next day I catch the bed. No, if you don't have a habit of walking, start slowly, build it up. But yes, maybe 3 months, 6 months down the line, you are fit enough to walk 5 to 6 kilometer without much effort. That is what is needed to lose weight. तो मैसेजेस जो आ रहे हैं मैडम के लिए, रेखा जी के लिए, बहुत सिंपल और सरल मैसेजेस। एक तो एक्सरसाइज करना शुरू करें। अगर आप 61 हैं तो सैर करनी शुरू करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड गो स्लो, बिल्ड अप स्लोली। अगर नीज अलाउ करते हैं तो स्टेयर्स चढ़ना शुरू करें ऊपर नीचे, बट डोंट Yes. ओवरडू इट। दूसरा जो था डाइट का था, चीनी गुड़ शक्कर कम करें प्लीज, घी मक्खन मलाई भी कम करें, और Yes. आलू अरबी अनाज। पर फिर मैडम बटारा पूछेंगी सब कुछ तो बंद करा दिया, 3 3 9, तो चीनी गुड़ शक्कर कम, आलू अरबी अनाज कम, और घी मक्खन मलाई कम, तो बचा क्या? तो इस 3 की पावर को लेते हैं, आप अपनी प्लेट को थोड़ा सा बदलें। जो नॉर्मल इंडियन थाली है उसमें खूब सारा आलू अरबी अनाज होता है, लॉट ऑफ स्टार्ची वेजिटेबल्स एंड लॉट ऑफ सीरियल्स। चाहे आप चावल ले रहे हैं, चाहे सूजी, मैदा या आटा, इन वट एवर वे यू आर टेकिंग, इसको चेंज करते हैं। तो एक 3 by 3 वाली थाली बनाते हैं, 1/3 1/3 1/3। याद रखने के लिए सिर्फ 1/3 आलू अरबी अनाज, जस्ट 1/3 सीरियल एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स। एंड डू रिमेंबर, स्वीट पोटैटो में, शक्करकंदी में आलू से कम कैलोरीज होती हैं, और Yes. स्वीट पोटैटो या शक्करकंदी में आलू से 3 गुना ज्यादा फाइबर होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो नाम पे ना जाएं, शक्करकंदी एक्चुअली इज हेल्दियर देन पोटैटो, देन व्हाइट पोटैटो। खैर, कमिंग बैक टू आवर 3 by 3 रूल, 1/3 आलू अरबी अनाज, 1/3 कम से कम रंगदार सब्जी, रंगदार सलाद, रंगदार फ्रूट, colored vegetables, fruits and salads. So try to increase the quantity of vegetables and salads जिनमें कलर हो। तो आलू अरबी आउट हो गया, शक्करकंदी आउट हो गई, बाकी चीजें बढ़ाएं। बाकी जो 1/3 बचता है, तो अभी तक आपने देख लिया होगा, हिंदी में बहुत एलिटरेटिव ये है, ये आलू अरबी अनाज, रंगदार फ्रूट सब्जी सलाद, एंड द लास्ट 1/3 इज जो प्लेट में होना चाहिए, वो होना चाहिए दूध और दही वाले खाने, दैट इज डेयरी प्रोडक्ट्स, द फॉर दूध, डी फॉर डेयरी, द फॉर देह विच इज फ्लैश, विच मीन्स मीट एंड एग्स, दैट इज अगर आप खाते हो तो नॉन वेजिटेरियन फूड, and the is for dry fruit as well, nuts. So try to increase the quantity of dairy products, nuts, and non-vegetarian food if you are taking. The is also for dal. तो जो बड़े वाले 3 हो जाएंगे, दाल, दह और फ्लेश फूड, एंड दी फॉर दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। नाउ दिस इज इजी टू रिमेंबर फॉर ऑल ऑफ अस। यदि आपकी प्लेट पहले ही ऐसी है तो बहुत अच्छा, आप उसमें आलू अरबी अनाज को और कम करने की कोशिश करें। प्लेट को छोटा करेंगे थोड़ा सा, बट यू ट्राई टू रिड्यूस द सीरियल पार्ट ओनली। एंड यदि ऐसा नहीं है तो ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सीरियल दैट यू बाय एंड दैट यू ईट, एंड try to increase the amount of green vegetables, salads, and also dals and milk products. घी मक्खन मलाई अवॉइड करना है, ये याद रखना है। सो डॉक्टर विनीत, इट्स बिन ग्रेट हैविंग यू विद अस। डॉक्टर नवल शर्मा जी भी आपको थैंक यू कर रहे हैं। Thank you, दुर्गा, sir. डॉक्टर अनिस यादव सर पूछ रहे हैं खाखरा, जो गुजराती फूड होता है, उसमें कितनी सर सेम कैलोरीज है होती जैसे रोटी है, सेम है है? जैसे रोटी है। हाँ। और घी, तो जो हमारे घर में प्रिजर्व, सर जो जो रात की रोटी बच जाती है उसका दूसरे दिन सुबह खाखरा बन जाता है। एंड इट नीड्स एन एक्स्ट्रा कोटिंग ऑफ ऑयल और घी एक्चुअली। यस, दैट्स ट्रू। सो उसमें घी और स्पाइसेस ज्यादा होते हैं, तो नो पॉइंट in having. Dr. Pawar sir is not able to walk because he has arthrodesis of the ankle. So what you can do, sir, is while sitting only you can do upper limb exercises यस। and weightlifting exercises. And instead of using the foot while sitting, you can do sitting yoga, जिसमें आप knees को move करते रहेंगे। यस। नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज की जा सकती है अपर लिम्स की। यू कैन ट्राई साइकिलिंग ऑल्सो इफ इट इज पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो नॉट वेट बेयरिंग। आपके फुट पे वेट नहीं पड़ेगा, आपके हिप्स पे पड़ेगा वेट जब आप साइकिल चला रहे हैं, एंड आपके नीज की रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। बट डॉक्टर विनीत, लाइक आई सेड, इट्स बिन ग्रेट हैविंग यू। ओबेसिटी हम सोचते थे बहुत ही भारी भरकम सा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट आपने इतना सिंपल बना दिया, इसको इतना सरल बना थैंक यू दिया। सर।
Sir, it is all because of you. I don't think I did Your much guiding force, after no, all sir, this. your guiding force always help us a lot. जो यहाँ पे जो हमारे अर्जुन जी हैं वो हैं डॉक्टर विनीत सुराना एंड यू मस्ट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ एवरीबडी हु And इज you are ऑल्सो Krishna. आई एम रिटायरिंग टू चित्रकूट नाउ दैट इज अ डिफरेंट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी मंडे और थर्सडे जैसा कि सब जानते हैं मैं केके मेटॉक्स में आता हूँ एज होस्ट 7 to 8 PM मगर केके मेटॉक्स तो रोज होता है तो मंडे और थर्सडे में अपनी चित्रकूट वाली जो 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 मेरी कुटिया है ना वो जो एग्जाइल वाली वहां से निकलता हूँ फॉर केके मेटॉक्स एंड टू मीट एवरीबॉडी वी ऑलवेज डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड हमारा उद्देश्य हमारा एम सबका सेम है दैट इज टू अचीव बेटर हेल्थ फॉर ऑल ऑफ अस आज के लिए तो इतना ही होगा और मैं आपको मिलूंगा फिर से सोमवार को ऑन मंडे विद डॉक्टर अनुज ठाकुर वो भी पीडियाट्रिशियन है एंड वी विल टॉक अबाउट चाइल्ड हेल्थ इन विंटर बट निकलने से पहले जाने से पहले डॉक्टर विनीत को पूछते हैं सर एनी मैसेज दैट यू हैव फॉर द एंटायर कंट्री आवर टॉपिक इज obesity management for primary care physicians. Okay, so before we say goodbye, I would definitely say that obesity is something which need to be discussed. It's a high time. We are actually moving towards a massive epidemic of obesity. The way we are looking at the childhood obesity, we need to be empathetic. We need to involve them our day-to-day decision, and we need to kind of take it as a head-on that we need to lose weight. If we don't do that today, remember 20 years down the line, all the hospital will be flooded with the cases of diabetes, stroke, and renal issues, cardiovascular issues if we don't tackle it today. So obesity is mother of all the diseases, and we have to tackle it today. The time is now. The time is now. And Swapna Jain ji भी कहती हैं, it is also willingness of the patient. Self-motivation plays an important role True. in reducing weight. So the time is now, सभी के लिए. For each and every member of the public, for each and every citizen of India, the time is now कि हम अपना भी ख्याल रखें वेट का. मैं भी कोशिश करता हूँ ख्याल रखने की अपनी. डॉक्टर विनीत भी करते हैं मुझे पता है. और स्वप्ना जैन जी तो हमारे रोल मॉडल हैं ही हैं फॉर वेट लॉस. तो द टाइम इज नाउ कि हम अपना भी ख्याल रखें और अपने आसपास वालों का भी. एंड स्वप्ना जैन जी याद करा रही हैं फॉर दोज हु लव खाकरास, खाकरा मशीन भी अवेलेबल है. उसमें घी की जरूरत Yes. नहीं पड़ती बनाने की. स्वप्ना जैन जी, दो नॉर्मली वी डोंट डिस्कस दिस. आपका और डॉक्टर विनीत का जो एथनिक बैकग्राउंड है वो भी सेम है. सो लेटर ऑन ऑफलाइन वी कैन डिस्कस हेल्दी रेसिपीज. So, and Shobna Taneja ji and Naval Sharma साहब and रुचिता गुप्ते जी को सबको थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. रेखा जी थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. आपको बहुत थैंक यू कि आपने आज के हमारे केके मेट टॉक्स को इतना रंगीन और इतना इंटरेक्टिव बनाया. ये सब के साथ आप सबसे इजाजत लेंगे. शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी एंड जय हिंद. Jai Hind. Jai Hind.